वेलकम टू तंबीस ओएसिस। तो ये मेरा डिजिटल लाइब्रेरी है, मतलब खुद का डिजिटल लाइब्रेरी वेयर आई जस्ट डंप सम थॉट्स, डंप सम आइडियाज, dump my reviews on any such topics, and just rant out something. And this will stay in my YouTube channel. This comes under my category of Tambis Oasis. मतलब पूरा एक वर्ल्ड एक साइड है और ओएसिस एक डिफरेंट इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर आई ओनली एग्जिस्ट एंड आई rant about something or I express about something. So welcome to Tambis Oasis. So let me make that clear that this is not, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो that I might be addressing someone, but I'll not take the names, but I might be addressing someone. So if you are listening, don't take it too personal, as this is just my thoughts to express. So डिस्क्लेमर टाइप. सो 2024 से नया चालू करने का सोचा था कि लेट मी स्टार्ट माय ओन डिजिटल लाइब्रेरी वेयर आई जस्ट एक्सप्रेस अबाउट माई सेल्फ. आज मतलब डेली मतलब डेली एक वीडियो आएगा. सो डेली आई विल एक्सप्रेस अबाउट ऑल माई स्टफ दैट गोइंग ऑन इन माई लाइफ and some observations or some analytic or some observation that I make. So I'll just rant about it. I'll just express about it. So let's start from December 31st night. तो घर पे पार्टी रखा है मैंने क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे. सो इट्स अ इट्स अ वेकेंट वेन्यू, मतलब. एंड आई एक अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो ठीक है, एक जगह मिलते हैं, दोस्त लोग के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, टाइम पास करते हैं. तो उसके लिए मैं बुलाया. एंड मी बीइंग अ ब्राह्मण एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नॉनवेज छुप छुप के खाता था. लाइक दैट वाज जस्ट अ क्यूरियोसिटी ऑफ मी दैट ओके, लेट्स टेस्ट दिस, कैसा लगेगा. क्योंकि दे एडवर्टाइज द नॉनवेज और द चिकन पार्ट एज मसाला, एकदम तिक्कट मसाला, रेडिश कुछ तो था. एंड आई ड्यू टू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आंध्रा, मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है. एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉनवेज वाज आल्सो वेरी स्पाइसी लुकिंग थिंग. सो दैट वाज अ क्यूरियोसिटी कि भाई ब्राह्मण्स आर नॉट अलाउड टू ईट चिकन और नॉनवेज स्टफ. सो एक बैरियर तो है, लाइक वैसा टाइप है कि अगर किसी ने बोल दिया कि ये नहीं करना है, सो ऑल यू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट थिंग कि ये बैरियर क्यों रखा है. सो इफ आई क्रॉस दिस बैरियर क्या होगा. तो वैसा टाइप थॉट. सो दैट डोमिनो इफेक्ट से चुप चुप के खाता था. आई डेंट एंजॉय द पार्ट, बट आई डेंट माइंड इट कि ओके, आई कैन, वैसा टाइप. बट आफ्टर डिस्कसिंग विथ माई पेरेंट्स एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब मैं मेच्योरिटी तो नहीं आया कि ओके, बाय बाय ईटिंग दिस चिकन यू आर किलिंग अ लाइफ, यू आर किलिंग दिस. सो उतना लेवल मेच्योरिटी तो अभी तक तो नहीं है कि ओके, आई एम स्टिल इन द स्टेज दैट ओके यू कैन ईट इफ दे आर वीक. सो वो टाइप की डोमिनेंस जो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप की जो डोमिनेंस है, ही रूल्स द वर्ल्ड. सो वैसा टाइप अभी तक वो मेच्योरिटी लेवल है मेरा. So I'm not minding that I am killing a life, so that I can enjoy that. वो maturity level तो अभी तक नहीं. But I kind of respect my parents' view on how they have been, how others look when I do this stuff. So वो point of view से देखा था कि if I say मैं एक ब्राह्मण है, मैं एक ब्राह्मण है, मेरा जनेऊ है, and I've been spotted that I am eating this kind of stuff outside. So जब तक चुप चुप के खा रहा है तब तक ठीक है. But when someone sees, when someone in the localities, when someone in the surroundings sees me, they're eating that kind of stuff, and when they address this whole thing to my parents, एक वैल्यू गिर जाता है पेरेंट्स का. लाइक यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन योर लाइफ. सो दैट वैल्यू ऑफ एक कैरेक्टर रहता है, एक तेरे लाइफ में कुछ कुछ कैरेक्टर्स रहता है, एंड ईच कैरेक्टर हैज सम वैल्यूज एंड रेस्पेक्टिव वैल्यूज. लाइक इट इज नॉट, इट माइट बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अदर कैरेक्टर. लाइक पापा का वैल्यू तेरा, तेरे मन से, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पापा का तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तेरा पापा का वैल्यू थोड़ा बड़ा रहेगा.
या मम्मी का वैल्यू बड़ा रहेगा पापा से, और ग्रैंड मदर का वैल्यू बड़ा रहेगा, वैसा टाइप रह सकता है। सो एक वैल्यूज रहता है, पैरामीटर्स रहता है एक सर्टेन कैरेक्टर्स को। सो व्हेन दैट वैल्यू is getting disrupted, or it is getting diminished, so तभी लगता है कि okay, you give some respect to that value, you give some respect to the character. So if that character is facing the trouble because of me, uh, and I'm also not enjoying that stuff ki, okay, uh, not a peer pressure, but I'm adjustable, like uh, all of my friends are non-vegetarians, non-veg eaters. So all of my friends are kind of carnivore type ki, they uh, they enjoy eating that food, or they enjoy eating fish, they enjoy eating chicken. So उन जब वो सराउंडिंग में हूं मैं, so I don't want them to, again, the characters and value, कि I don't want them to get लेस वैल्यू बिकॉज ऑफ मी, कि मैं अकेला वेज खा रहा हूँ, सो माई वैल्यू गेटिंग लो इन फ्रंट ऑफ देम, एंड वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड chaotic हो जाता है लास्ट में, लाइक यू डोंट नो वेयर इट गोस. सो आई काइंड ऑफ एडजस्ट कि भाई ठीक है, ओके, आई डोंट माइंड ईटिंग, बट आई ऑल्सो डोंट हेट ईटिंग दैट, सो ओके. आग नॉट ऑल्सो आग बंद और कान, so I don't mind eating, so वैसा खाता था. But after this incident, after this parents addressing that this is the problems and this is the respect that others are giving to me because of you eating this non-veg, so that was hard eating to me कि okay, it might be independent कि मेरा एक बबल था फ्रेंड्स के साथ कि आई वाज हैविंग दैट मोमेंट, एंड आई एम एडजस्टिंग टू दैट surroundings, I'm eating that, but एक वैल्यू जो, so that independent bubble reflected some other bubble of my life कि weirdly एक independent bubble reflected some other parameters. So मुझे लगा okay, then I started observing कि क्या क्या चीज है जो indirectly will affect other things. So उस दिन से थोड़ा ऑब्जर्व करने लगा. सो आफ्टर दैट, कीपिंग दैट ऑल्सो इन माई माइंड, दैट पैरामीटर्स की जो भी तू चीज तो कर रहा है बंद कमरे में जो कर रहा है, सो इट माइट बी योर बबल कि तू कॉन्फिडेंट है, तू सिक्योर है, तू प्रोटेक्टेड है उसमें, बट somehow it will reflect other bubble of your life. Independent, ये independent रहेगा, but somehow it is related to other bubble also. So ये ऑल्सो वो काइंड ऑफ मेच्योरिटी आ गया कि थिंकिंग अबाउट अदर्स, वो एक वैल्यू एडिशन आ गया. सो आफ्टर दैट इंसिडेंट आई स्टॉप्ड, नॉट स्टॉप्ड ईटिंग, आई रेफ्यूज्ड अदर्स टू डोंट फोर्स मी टू ईट. ऑल्सो आई डोंट माइंड नॉट ईटिंग दैट चिकन, क्योंकि उतना कुछ पर्सनली आई डोंट कनेक्ट टू इट. सो इट वॉज ओके टू लीव कि ओके, नहीं खाना है, that is reflecting my parents respect, so okay, नहीं खाते, क्यों फालतू में क्यों chaotic को इनवाइट करेगी, ओके नहीं खाते. सो आफ्टर दैट आई स्टार्ट रिफ्यूजिंग, आई स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग अदर्स टू ओके, मैं नहीं खाऊंगा, सो आई नॉट एक्सप्लेन व्हाई आई एम नॉट ईटिंग, बट आई एम नॉट ईटिंग. सो जब मैं क्लियर करूंगा some of my friends parameters, थोड़ा एक डिस्कशन होता है कि भाई क्यों क्यों नहीं खा रहा है, सब लोग तो खा रहे हैं, तू क्यों नहीं खा रहा है. सो देर एक तेरा सेल्फ रेस्पेक्ट वैल्यू आता है कि एट व्हाट थ्रेशोल्ड वैल्यू वेयर यू विल नील डाउन टू देयर रिक्वेस्ट. इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट वो एक आता है कि व्हाट मोमेंट, विच मोमेंट विल ट्रिगर यू टू ओके जस्ट लीव, ओके ओके ये बबल होने दे, ये दूसरा बबल इफेक्ट होने दे, बट ओके आई एम विलिंग टू, ओके आई एम विलिंग टू चूज दिस काइंड ऑफ लाइफ. सो एक एक तरह इधर एक अनदर वैल्यू आता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट का एक आता है. सो until now I am very rigid about it कि okay I am standing not accepting
that non-veg thing. So I'm cool with it, and I respect a lot where people also give respect to that decision. कि when you're rigid enough, people give people give respect. कि when you are dynamically answering कि ठीक है आज नहीं खाते, so there your the value is also diminished. कि okay, he is taking his decision, but तो अगर डायनामिकली आंसर देगा ना कि अगर तो डायनामिक, अगर तू डायनम डायनामाइटली क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एंड इफ यू आर नॉट श्योर इनफ बट यू आर टेकिंग सम डिसीजन, वो भी एक वैल्यू गिर जाता है एंड योर वैल्यू इज लूजिंग, क्योंकि लोग इज लाइक ओके इसको कन्विंस कर सकते हैं, सो नहीं नहीं नहीं. सो वन थिंग इज यू हैव टू बी रिजिड एनफ ऑन योर डिसीजन कि मुझे नहीं करना है, सो गो फुल ऑन विद इट कि ऑल इन कर दे वो डिसीजन पे कि ओके कुछ भी हो मुझे नहीं करना है. सो दिस इज द प्रिंसिपल यू टेक. सो what I observed is other people give respect to you when you follow your principle, not others or the truth or the dharma thing. But if you follow your principle only, uh, people give respect to it also. कि okay तुझे नहीं खाना है and you are rigid with it and you are standing up straight कि okay नहीं खाना है, so people give respect. So जब वो देते हैं ना, you will get some different level satisfaction कि okay people are accepting my decision or people are agreeing with it. So एक हाई मिलता है उधर भी. So that also I observed and it felt nice. And मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स भी, they also respect what when you are rigid enough they also respect you. So I respect my society friends also in that kind of situation or parameters. So वो एक अच्छा लगा कि I am okay, I am in good environment, I am with good people. So वो एक ऑब्जर्व आया. एंड द अदर थिंग इज मेरा स्लीप लाइफ पूरा चुद गया कि अभी फ्रॉम वन वीक माय पेरेंट्स वर नॉट एट होम एंड माय स्लीप साइकिल वाज टू रैंडम, क्योंकि मैं अचानक से सो जाता था लाइक अराउंड आफ्टरनून आफ्टर ईटिंग लंच 2 to 4 2 to 5 2 to 6 सो जाता था एंड दैट अफेक्टेड दैट रात को अराउंड 2 2 3 तक मैं जागा रहता था. सो वो एक अनबैलेंस हो जाता कि ओके रात को जाग रहा है, सो सुबह सोते हैं, सो स्लीप लाइक पूरा रिवर्स हो गया. सो तभी क्या किया मैंने, फ्रॉम न्यू ईयर आई स्टार्टेड कि ओके लेट्स स्लीप अर्ली. एक दोस्त के साथ भी ऐसा बात किया, सो ही आल्सो अग्रीड कि स्लीप अर्ली ठीक है, बट ये स्लीप साइकिल जो है अभी तक तो रैंडमनेस, सो हाउ टू रिड्यूस इट. तो एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने खुद से, वो है कि 31st नाइट मैं सोया नहीं. मैं और मेरे दोस्त घर पे थे और वी डिडंट स्लीप एट वी डिडंट स्लीप एक्चुअली कि अराउंड 5:36 तक तो हम लोग जागे थे, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग तो कुछ तो खा रहे थे. सो वी वर एंजॉयिंग, वी वर डिस्कसिंग समथिंग. सो वो एक एको वो एक बबल बन गया. ओके, सो 5:30 तक हम लोग जागे थे. सो आई मेड वन डिसीजन दैट ओके विल नॉट स्लीप दिस होल डे. मतलब अगर नींद भी आया ना, अगर 12 बजे 1 बजे मैं सोऊंगा नहीं, कुछ तो करूंगा या कुछ ना कुछ ऐसा बाहर चले जाऊंगा और समथिंग विल आई डू, बट आई वोंट स्लीप दिस होल डे. सो देखा जाए तो 31st अराउंड when it has got up on 31st कुछ अराउंड 11:30 12. ओके 11:30 12 मैं उठा था एंड टिल नाउ 1st January and the time is 9 and the time is 9:42. So 12 p.m. in 31st 12 p.m. से अभी फर्स्ट का 9:42 तक आई एम अवेक. सो अभी मुझे नींद आ रहा है. माई आईज आर नाउ माई आईलिड्स आर हैवी नाउ कि दे आर फोर्सिंग मी टू स्लीप. सो अभी तो अगर सोया आई थिंक आई कैन रीस्टार्ट माई स्लीप साइकिल कि आफ्टर अवेकिंग दिस मच टाइम अभी मुझे नींद आएगा रात को. सो आफ्टर गेटिंग दिस नाइस स्लीप इन द नाइट I think you will get up naturally in the morning and again you will continue with the sleep cycle. So वो एक
I'm trying this experiment ki okay, let's try this way by not sleeping the whole day. वन डे रिस्टार्ट की ये रिबूट टाइप है कि फैक्ट्री रिसेट ऑफ वन डे कि एक दिन पूरा सोऊंगा नहीं, लाइक उपवास टाइप कि एक दिन खाऊंगा नहीं, वैसा टाइप एक दिन सोऊंगा नहीं, जागरण टाइप बोल सकते हैं कि एक दिन सोऊंगा नहीं, ओके नेक्स्ट डे से विल कंटिन्यू दैट स्लीप साइकिल. सो आई एम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, सो देखते कहाँ जाएगा ये. एंड वन हाँ, एंड जब न्यू ईयर में जब दोस्त आए थे and our friends group is kind of little interesting क्योंकि the friend group uh, covers wide that friend group covers wide spectrum of age. मतलब different age spectrum सब थे, like in the friend zone of in the society's friend zone थी. हाँ जब सो एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा फ्रेंड सर्कल जो है, सो दैट कवर्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एज. मतलब um, I have friends younger than me, like 2 3 years younger than me. I have friends way more older than me, like uncles type. कि वो भी थे, like 40 to 50 he's also friends with me. And 18 year 19-year old guy, so he's also friend with me. So wide spectrum hai. So because of this you will also experience that wide spectrum of world they are they lived. मतलब एक 18 ईयर और 20 ईयर्स ओल्ड का एक वर्ल्ड अलग रहेगा, एंड एक 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस और वर्ल्ड अलग रहेगा. सो यू विल एक्सपीरियंस दैट होल स्पेक्ट्रम की ओके, दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ, और दिस इज व्हाट ही इज rooting for, or this uncle he has this much respects, or he has this much parameters in his life where he respects, and this is what he is protecting for, and this is what he is rooting for. So एक observation मिलेगा by keeping this wide spectrum of friends. So that kind of helps me a lot to understand the world. So उसमें एक observation वो किया कि reality एक world है, and all characters and all people have one filter कि after applying this filter that world becomes his life. So एक 18 ईयर ओल्ड का फिल्टर अलग रहेगा और 45 ईयर का फिल्टर अलग रहेगा. सो 45 एक्सपीरियंस किया, सो his root his filter is okay and not into that exciting stuff कि ओके okay, चलो जाते वीकेंड में बाहर जाते हैं और कुछ तो अभी दारू पीते सिगरेट पीते और विल गेट हाई. सो he experienced that in his teenage, and now एक फिल्टर आ गया कि मैच्योर्ड एक फिल्टर आ गया, एक्सपीरियंस फिल्टर नॉट मैच्योर्ड, एक एक्सपीरियंस फिल्टर आ गया कि ये सब कर दिया ओके नाउ आई एम रिलैक्सिंग. एक काम लाइफ जीते, like I spend my weekend with my family, so that is high to him. So that also gives equal high. एक तू दारू पी के नशे में एक टीनेज बॉय का एक हाई, एंड एक 45 ईयर ओल्ड स्पेंडिंग हिज क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली गिव्स द सेम हाई. वो एक ऑब्जर्व किया कि बोथ हैज हाई इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, कि ये अलग वे में हाई है और ये भी अलग वे में हाई है, एंड दे आर नॉट कंपेरेबल बट दे बोथ गिव इक्वल लेवल ऑफ किक एंड हाई. सो दैट थिंग. एंड बहुत लोगों का बहुत अलग अलग वर्ल्ड रहेगा, एंड इफ यू वांट them to respect you, or if you want them to give attention towards you, so you have to give some connection to that ki okay I also have the same interest, so okay I'm linking with it. So this मेरा एक फिल्टर में और तेरा फिल्टर में दिस बॉन्डेज जो है एक पॉइंट है, दिस इज कॉमन थिंग. सो ओके अभी तेरा हाथ पकड़ेगा एंड यू सी मी एंड यू लुक एट मी गिव यू अटेंशन. सो वो है. सो sometimes if you want some attention you forcibly act ki okay I am interested in what you are speaking, so I will act something that you will speak to me, and and that domino effect will create some bondage between us. So it is also not bad, it is also clever mind ki how to connect with people which had different worlds and different filters in their life.
still you are connecting with it, and still you are having a bond. So that art वो भी एक beauty है भाई कि how to act to get attention, a respectful attention, not कि ऐसा बाहर जा रहा है कुछ तो गाली दे दिया एंड पीपल आर ओके, पीपल आर लुकिंग एट यू एंड कुछ तो हंस दिया एंड एक मोमेंटरीली हाई मिलता है कि भाई क्या कूल बंदा है, एंड आफ्टर दैट you don't connect with him a lot. So that kind of connection bond थोड़ा unstable है और volatile है. So if you and if you act intelligently, if you're genuinely ki, okay, I'm not in your world, but I want to give, I want to establish some connection. So I want to establish some connection. So I'll somehow act, I'll play something around you so that you will give attention to me, or to have a bond with you. वो भी crazy level एक IQ level game है. So you have to play with it. So वो कैसे experience के साथ ही आएगा. So you have to talk with him. So you have to कभी कभी कनेक्शन ब्रेकअप होता है कि यू आर ट्राइंग टू बॉन्डिंग एंड उसको पता चल जाता है कि यू आर एक्टिंग. सो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी दैट ओके दिस इज नॉट वर्किंग. सो ट्राई इन अनदर वे और ट्राई विथ अदर पीपल कि ओके शायद ये फॉर्मूला इसको सूट नहीं कर रहा है, शायद इस पे सूट हो जाएगा. सो आई थिंक दिस दिस पर्सन हैज सम लो थ्रेशोल्ड ऑफ दिस कनेक्टिविटी, सो इसके साथ ये फॉर्मूला सूट हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी ऑल्सो यू हैव टू गेन. वो मैंने ऑब्जर्व किया कि ओके आई हैव टू गेन दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड आई शुड ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल ऑफलाइन. मतलब बाहर जाने के बाद भी you need something to speak, you need something to speak मतलब you should need that much knowledge. You have to be uh, you have to carry that bag of knowledge where any random person comes, you still have that confident enough to make some establishment कि एक जनरलाइज टॉपिक पकड़ो एंड गो विद इट एंड हैव सम फुल नॉलेज ऑफ इट एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग कि ओके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ कि इफ यू आर नॉट if you're not carrying that baggage of knowledge of some connectivity topics, try to question it, try to understand. Understanding a crazy level concept hai कि if you try to understand something without the knowledge you have, you can still make connection. कि ask questions a lot. Ask questions मतलब straight away questions नहीं. You have to play with the question कि you have to support the person but still you have to question them कि okay, I respect your principle, I respect this decision you have, but I have some question based on that principle कि इसका अगर ये सिचुएशन में ये रहेगा तो तभी क्या होगा, और how will this affect others. सो वैसा टाइप क्वेश्चंस अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपने अगर सीख लिया ना कि दैट इज ऑल्सो डिफरेंट लेवल बॉल गेम टू प्ले विद. सो ओके आई हैड एक ऑब्जर्वेशन है कि प्ले विथ क्वेश्चंस अलॉट. दो यू आर नॉट वेटिंग फॉर द आंसर, प्ले विद द क्वेश्चन. मोस्टली वो क्या होता है ना, you have that understanding but you need that perfect question ki why I'm learning this, or why I'm giving connection, why I'm giving establishment with this character. So एक proper एक question आएगा. So you have that answer, you have that knowledge, but that realization comes with asking questions कि अगर तू question start करने लगा and you will gain some realization कि okay I have this knowledge also. एक क्वेश्चन आया that made me clear that okay ऐसा हो सकता है, ऐसा चल रहा है सोसाइटी, या ऐसा चल रहा है एक सिस्टम. सो ओके दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट क्वेश्चन अलॉट एंड you have that answer but a proper question will give that meaning for that answer ki okay this is why this is happening. So a question karna important है and you have to play with the questions and you have to play with the questions. And again another experiment that is for caring purpose I am also trying one experiment that plants को मैं पहले plants को पानी देने का उतना कष्ट नहीं लेता था and I thought this is as a okay कुछ तो
देना है पानी तो दे रहा था, या मम्मी ने बोला इसलिए पानी, लाइक आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, सो वैसा था. फ्रॉम दिस ईयर आई एम स्टार्टिंग दिस एज एन I'm starting this as an experiment that I'm adopting this plant. Okay, if I'm going to adapt this plant, what kind of caring I have to give? So let's experiment on that. Okay, you get some responsibility by adapting that. So if you adapt some person, or if you adapt one principle, so you have that responsibility to carry that. You have to protect it. You have to protect the principle. So that comes only through adoption. You adopt one thing एंड यू गिव केयरिंग. सो अडॉप्शन मतलब कि बस तू रख दिया वैसा नहीं. अडॉप्शन इज प्रॉपर अडॉप्शन. सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्लांट्स ऑल्सो कि okay, from this year I'm adopting this plants, and okay, I'll see what kind of care I can give. That एक reflect भी आएगा कि okay, this is kind of what my understanding of caring means, or I have to enhance the understanding, or I have to enhance the caring, or मैं प्रॉपर केयरिंग नहीं दे रहा या ओवर केयरिंग हो रहा है. सो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि अगर पानी ज्यादा दे दिया मर जाएगा, काइंड ऑफ एक आफ्टर फ्यू डेज मर जाएगा, और नहीं दिया वो भी मरेगा. सो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ केयरिंग यू आर गिविंग टू काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग. कि नॉन लिविंग थिंग इज बेटर टू एक्सपेरिमेंट ऑन, either rather than experimenting on living thing, a non-living thing, or a non-verbal speaking, so a non-responsive thing. So उस पे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करो ऑन डेलिकेट मैटर्स लाइक केयरिंग, एंगर इश्यूज, वो सब उस पे करो कि समझो एक पेपर है या कुछ ऐसा डेलिकेट थिंग है, एंड योर एंगर इज टू नॉट टेयर इट और नॉट टू हार्म इट. सो how will you handle it, or how will you control your anger, or how will you show your anger that but not harming that object? ये भी क्रेजी पॉइंट है भाई कि एक्सप्रेसिंग द एंगर बट नॉट हर्टिंग द पर्सन और नॉट हर्टिंग दैट एंटिटी. वो भी सीखना पड़ेगा कि राइट टू एक्सप्रेस है बट इट्स नॉट हर्ट अदर्स, क्योंकि दैट इज ऑल्सो डिप्लोमेटिक भाई कि ओके, if you dive deep in it, if you dive deep into it, आप कर सकते हो कि ओके, unless the law is enforcing or the law is coming to the grounds, you can hurt people, you can hurt verbally, it is okay. Right to speak में वो भी है कि you have to express the thoughts, and it might hurt some feeling, but you can, कभी कभी आता है ना कि भाई you should hurt this person but physically I can't but verbally I can. So what kind of thing I can choose the words कि ठीक है माँ पे गाली दिया तो चलेगा क्या, बट am I confident enough to give that harmful, am I confident enough to choose that words to disrespect someone's mother or disrespect some woman parameter in his life? So एक confident आना चाहिए कि okay, now I am ready to harm this by disrespecting their family member. तो एक confidence आना चाहिए. Unless so if you're not confident enough, don't disrespect at all. एक confident आना चाहिए, and you have to be ready to face the consequences. So if you're not ready to for the consequences, don't disrespect anyone. आप अपने बबल पे रहो. इफ यू आर फेसिंग दैट बुलीनेस, सो एक चेंबर में रहो और एक एड्रेस करो ये प्रॉब्लम किसी को. गिव द प्रॉब्लम टू अदर पर्सन कि ओके ही इज ट्रबलिंग मी, सो आई एम एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम टू यू, एंड यू टेक कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन और यू हैंडल दैट प्रॉब्लम. एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है कि ओके दैट एनिमल में वो रणविजय सिंह कर रहा है कि you develop on yourself first, and you gain that much experience, you gain that confident enough, and then you come back with it. So एक पर्सनल लेवल है, एंड एक प्रॉपर पेशेंस लेवल गेन होएगा. एंड द अदर थिंग इज लेट इट गो कि ओके हो रहा है चलने दे वैसा टाइप. ओके, दिस इज व्हाट ओएसिस मींस अकॉर्डिंग टू मी. कि एक स्टार्ट किधर से तो किया मैं, और मैं रैबिट होल में घुसते जा रहा है, एंड किधर किधर तो कनेक्शन हो रहा है, एंड somewhere else I'm pointing out the situation, or I'm talking about. So this will be kind of that unedited, मतलब थोड़ा pauses or act like this such as so, ये सब तो कट होएगा. but apart from this will be kind of go कि भाई चलो बात करो भाई,
आप भी आप तुम लोग भी एक स्टार्ट करो, एक मोबाइल रखो सामने, बात करते रहो, बोलते रहो, एंड यू जस्ट अपलोड इट ऑन। क्योंकि जब आप बात करोगे ना, सो सम वर्ड्स और सम सेंटेंसेस वेर पीपल आर फाइंडिंग दैट वर्ड्स और सेंटेंसेस टू रिलेट विद इट और टू कनेक्ट विद इट। जब ये बात जब उनको सुनाई देगा या जब देखा जाएगा, सो दे विल ऑल्सो फाइंड दैट रीच कि ओके, this is what I'm feeling and this is the right sentences to articulate with it or to address it. So एक kind of motivation और एक responsibility आएगा कि okay, this is the sentence I am using for these kind of situations. So if one is not finding that words or sentences to form for the situation, these kind of emotions or these kind of sentences they can use. So एक example create करेंगे आप. So I also promote कि freedom of speech है, and you misuse it or use it, anything you can do. So that is that kind of one loophole or leverage that Indian or this Republic democratic has. If you have that right to speech, and you can misuse it as you wish, but you need to be ready for the consequences. That is only thing I observed. Ki if you are ready for the consequences, you can proceed. Ki if you are going to harm someone, if you are ready for the consequences, you can harm. But the only thing is you have to face the consequences. Consequences, matlab, it may come in any form, or it may harm your any bubble in your life or any character in your life. Ki uh, okay, now I will reconnect with that first thing. Ki okay, the first thing was I was not ready, but I was unaware of the consequences of eating that chicken part or eating the non-vegetarian part in the past year. Ki okay, I was ready to face it, or I was not aware of the consequences of eating this. So मैंने खा लिया, and the consequences what it affected my parents respect or value. So if you are respecting one's value or one's respect, so I took the decision that okay, I'll stop eating this. And it is not kind of sacrifice that I'm leaving this kind of non-vegetarian part for that respect, because I'm okay with not eating. I was not I was not getting harmed by eating that कि भाई अगर खा लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. I was not in that kind of image, and I was also not in kind of that image that okay, अगर नहीं खाया तो कुछ तो I will miss something in my life. कि अगर ये this kind of chicken part अगर नहीं खाया तो I'll miss something, I will miss that experience. I was not in that kind of bracket also. Okay, I'm going I'm ready to not sacrifice, I'm going to let it go. Okay, नहीं खाते, okay, why to invite chaos? So okay, I let it go. So वैसा type. So if you're not ready for the consequences, and if you're not confident enough to take that decision of harming, कि अगर तुझे खाना है and तुझे पसंद है, and you are ready to face the consequences that your parents will get disrespect because of that, so you prepare for that consequence. You understand कि बाकी लोगों को समझा कि तेरा सिचुएशन की this is my kind of taste, and this is what I like, and this is the resistance part in my life. So उसको प्रॉपरली बिठा के एक्सप्लेन कर. अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, so you explain your parents that okay, other people showing giving respect for what I'm doing should not matter you at all. So वैसा टाइप एक एक्सप्लेन कर पेरेंट्स को. You convince them कि again, if you're confident enough, or if you are per picture clear that you are going to eat that chicken, so do this कि okay, explain your parents कि okay, I like this part and I don't want to miss that kind of taste in my life or in my experience. So please give some space for me, or खाने दो मुझे वैसा टाइप. So convince your parents. If you're not, if पता नहीं है, अगर convince नहीं हुआ तो I don't know what is the next step. So you experiment कि all is all the life is about experiments, trial and error ही है. कुछ कुछ ट्रायल्स सक्सेस होता है, एंड कुछ कुछ हिट होता है. सो
See, there's no, okay, diplomatic बोलने वाला था कि there is nothing such thing as success. Sorry, there is no such thing as failures. It is always someone's success that you envy of. वो कुछ तो क्रेजी वर्ड, कुछ तो क्रेजी सेंटेंस आ गया, शिट, ये कुछ तो यूज करूंगा मैं। तो वैसा टाइप की, not convincing your parents is your parents success of standing on their principles कि ओके, हम लोग का फैमिली ये नहीं खाना चाहिए, सो आई एम टेकिंग दैट कॉन्फिडेंट रिजिड प्रिंसिपल दैट ओके, मेरा फैमिली नहीं खाएगा, सो नहीं खाएगा, तू नहीं खाएगा, सो इवन इफ यू हैव दैट फॉन्ड ऑफ टेस्ट, यू शुड नॉट। सो वैसा टाइप अगर रिजिडिटी है, सो यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स कि भाई ओके, उतना काइंड ऑफ रिजिडिटी आप में है। एंड दिस इज ऑल पर्सनल, देन दिस इज ऑल पर्सनल इमोशंस, मतलब दिस इज व्हाट आई सी इन माय वर्ल्ड कि ओके, दिस इज व्हाट आई केयर अबाउट, दिस इज व्हाट आई आई गिव सो मच वैल्यू फॉर द रेस्पेक्टिंग मतलब respect is also subjective, but some parameters wise I give value to that respect. So अगर ये respect किसी के साथ भी हो, आई एम ओके विद इट कि ओके, आई एम विलिंग टू kneel down, and okay, I'm okay to surrender in front of him कि if you have that kind of respect and value I'm giving, I'm okay to kneel down. So वैसा टाइप, this is what I see in my world and this is how I do. So it might change. And मैंने कुछ तो लिखा था इंस्टाग्राम में भी कि हिपोक्रेसी इंडिकेट्स दैट यू आर evolving. हिपोक्रेसी मतलब ये नहीं कि भाई जो यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन दैट प्रिंसिपल यू हैव, इट इज evolving कि जो पहले तुझे रॉन्ग लगता था एंड यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ राइट नाउ, सो वाइस वर्सा, जो तुझे गलत लगता था अभी राइट लग रहा है, so, जो तुझे राइट लगा अभी गलत लग सकता है, वैसा टाइप. सो ईटिंग दैट नॉन वेज पार्ट इन माई लाइफ वॉज ओके टू मी, सो नाउ इट आई एम नॉट, सो वैसा टाइप. हिपोक्रेसी मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ की डिविनिंग वैल्यू नहीं है. हिपोक्रेसी मीन्स यू आर evolving, you are changing your perspective, you are changing your point of view to read that subject, to read that situation. So okay, बहुत हो गया शायद. So let's discuss something. So so let's discuss this thing. Okay, I'm writing this kind of story where in a couple that their bonding, the relationship in the marriage is getting diluted because of that respect overshadows the lust in the intimacy part. Ki, okay, this is where I'm seeking for the knowledge, where uh, I will ask some female friends of mine, or I'll ask my mother or father, or I'll ask my parents, or I'll uh, I'll question them for gaining that point of view, that what is the role of intimacy part of what is the role of sex in the marriage. कि मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जब नया नया न्यू एज मैरिज है, तभी यू गिव सो मच रेस्पेक्ट और यू गिव सो मच वैल्यू फॉर दैट सेक्स पार्ट इन योर लाइफ कि ओके, यू विश फॉर अ ग्रेट सेक्स इन योर at night ki okay, you wish a great sex with your partner, you will have that kind of intimacy part ki you'll get to know each other's anatomy or body, you'll understand each other's emotions. So वो एक kind of lust type है, pure lust type, वो एक form होएगा. But when you are growing enough, when you are experiencing a life, uh, there now the sex part in your life gets diluted, it's not given that much value क्योंकि you don't see your parents मतलब अभी it's getting kind of normalized I think, पता नहीं socialized शायद, but आफ्टर सर्टेन लेवल एक वैल्यू जो है वो गिर जाता है. सो एट दैट मोमेंट some other some other parameters will engage you in that relationship ki taking care of him or taking care of her, uh, in such kind of situations, or just loving in different way. So
वो एक आ जाता है. So my question was, what if a young couple realize that sex is not only the part where you show your love, or you express your love only through this way, this form. You have other forms. You have, मतलब एक maturity, एक experience आने के बाद एक आ जाता है कि you show this love in different way. So why not bring that kind of experience level in the starting age? If they are not confident enough, or if they are not comfort with that sex part in their life, ये वे में क्यों नहीं कर सकते? और how to make this uh, different forms of expressing love more strong than that sex part in that age, कि एक टीनेज एक टीनेज लव एंड सेक्स का एक हाई रहता है, एक स्टैंडर्ड्स रहता है. एंड इफ यू वांट टू डोमिनेट दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय different forms of showing love, so how much creative you have to be enough to exceed the standards. So that kind of area I am focusing, or I'm looking for in my story, कि okay, वैसा टाइप कुछ लिखते हैं. Will deep dive into the more psychological part, और वैसा टाइप की अभी क्या करेंगे. So and the main thing is, I don't want them to break apart, कि मुझे, I don't want them to leave, I don't want to break that relationship. वो रहना क्या है, I want them to be together, but that एक standard जो है sex in the teenage life, in the teenage part of life, I want that other forms to be more dominating. So how they are, and this is also personal to their characters, their world. It might be different for other people, yet other forms utna nahi. I'm okay. I'm comfort with the sex part in my life. So इसको dominate करते रहूंगा, and other parts will uh, वाइस वर्सा कम होएगा, एंड एक्सपीरियंस वाइज ये भी बढ़ेगा. सो वैसा टाइप. सो इट इज नॉट generalized answer for each and everything. So this kind of answer, or this kind of solution is only applicable, or it is only comfort solution for this couple in this story. So एक generalized तो नहीं कर रहा हूँ, only for these parameters, these bubble. So what is this situation, what is this solution? So वो kind of thoughts में हूँ मैं. So I'll articulate on it, or I'll brainstorm on that also. So it's एक आता है भाई, if you express all your thoughts ना, you will free up your mind, कि जो भी चीज तू अंदर रखा है वो सब बाहर निकल जाएगा, and then uh, you will invite new thoughts in your brain. कि okay, you have this free space now, you let it out all your thoughts and emotion. Now you have that free space in your mind, कि okay, now you invite some more creative thoughts, some more generic thoughts, or more innovative thoughts, कि the गुद्दा वाले thoughts, कि भाई crazy thought, भाई ये कैसे कर दिया, कि ये कैसे सोचा मैंने, कि that kind of space you'll get when you let out some, when you excrete that old ideas or old thoughts, that in your mind, when you excrete all these things, you will invite new stuff to digest, कि कुछ तो crazy, you will uh, you will have that hunger also, that भाई दिमाग खाली हो गया भाई, कुछ कुछ तो थॉट चाहिए, कुछ तो यूनिक थॉट चाहिए. दैट हंगर you will get only by letting out your thoughts. You will hunger you will get only by expressing all your emotions frankly, or सब भड़ास निकालते हैं. When you're dumping all your thoughts and ideas, then you will get some new in creative, कि not creative, new thoughts, कि it might be worse, it might be एकदम गंदा सा रहेगा. You will invite new thoughts. So where, so I give respect to thoughts in my life. So this is why I'm trying this kind of uh, content, where I let out all my thoughts, and express all my emotions towards the thing. And okay, I'm okay expressing my this bad stuff, I'm okay expressing my good stuff. So letting out होना चाहिए, कि जब छोड़ेगा तभी you will create a room for a space, you will create a room in your space, कि बाहर भेजना चाहिए. So वो important है. So this is why I'm creating this content. So 10:15 हो गया. So I think let's end this meeting. थोड़ा edit मारूंगा ये, and I'll just upload it on in 11 o'clock. So we'll meet on
tomorrow. देखते कल, we'll see what kind of experience or what kind of reality I experience in tomorrow. Let's see, कल देखते हैं what kind of experience I had to be, what kind of experience I need to be faced, or what kind of new situations that I'm thinking to handle about, or I'm finding the solution for the situation. So let's meet tomorrow at 11 o'clock time. Cool. Bye bye. And also subscribe. Bye. I'm not, matlab, I'm not wishing for so much views and likes for this content. This is for my personal stuff. And you're, if you're connecting with it, and if you're liking this kind of stuff, and you want me to express more such that, and you want me to, and you wish more kind of such thoughts to be expressed, so please like, मतलब वो एक बूस्ट मिलेगा कि ओके, एक एंगेजमेंट मिलेगा कि ओके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 11 बजे मुझे वापस, आई नीड टू अपलोड दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड आई नीड फॉर दिस कंटेंट. ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मोस्टली सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करो क्योंकि लर्निंग स्टेज में हूँ और बर्डिंग स्टेज में हूँ. सो प्रॉपर प्लांटिंग एंड सपोर्ट चाहिए. सो सब्सक्राइब करो पहले. आई एम नॉट मोर इनटू दैट लाइक्स एंड व्यूज. तो सब्सक्राइब एक बढ़ना चाहिए, एंड देन आई विल प्रॉमिस यू फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट according to me. I'll also experience some, okay, this is what not working for my audience, or this is not working for me personally. So कुछ कुछ रिव्यूज मैंने मेरे रिलेटिव्स के साथ भी डिस्कस किया था, एंड I have one relative that he is fully negative. कि negative मतलब he has that high threshold in his life कि these are the parameters. He is well educated and respected person in the family. So he has such kind of एक noble principles है उनका लाइफ में. So anything I do, it look kind of childish or kind of vulgar. So he's there addressing me. So this is where you are not getting into noble items. This is where you are lacking that kind of quality. So एक मेरे पास एक सपोर्ट, एक फ्रैंकनेस है मेरे पास कि ओके, एक बंदा है जो बोल रहा है कि भाई गंदा तू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आई वांट दैट पर्सन, यो, आई वांट दैट पर्सन की यू आर वेस्टिंग योर टाइम करके बोलना चाहिए बंदा. देन यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि ओके क्या करें. सो आई नीड टू एवॉल्व, आई नीड टू upgrade myself. So what kind of thing I have to question to myself or question other people to gain my quality or to improve my quality. So अभी अभी मुझे realize हो रहा है, या I am gaining that maturity that you need that negative part in your life to reflect. This is what you are lacking. मतलब एक बंदा, एक रहेगा कि भाई समझ ले कुछ तो, एक तूने पेंटिंग किया, एक बंदा रहेगा कि भाई नहीं गंदा किया है वो, तेरा स्ट्रोक्स बराबर नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा नहीं है, तेरा थॉट अच्छा नहीं है, या तेरा जो भी बना रहा है वही तेरा फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है. सो दैट विल गिव यू द रिफ्लेक्ट आएगा कि ओके, दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, और दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग. वो बंदा कुछ भी तू, यू यू विल ट्राई, तू ऊपर नीचे गिरेगा, यू विल ट्राई टू इम्प्रेस हिम, बट एक बंदा रहेगा हु विल ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट यू. So I give that respect or value for that person, and I'll not express that कि भाई I have that respect on you. क्योंकि अगर बोल दिया, he will change his thoughts कि he will also try to manipulate. वो नहीं चाहिए. So I want that frankness filter. So I'll not address him. So वैसा टाइप कि एक नेगेटिव कैरेक्टर चाहिए तेरे लाइफ में, where he is only there to reflect कि भाई तू गंदा कर रहा है, यू आर लैकिंग, यू आर, मतलब एक बंदा चाहिए जो चूतिया है तू बोल रहा है. दिस इज वेरी वल्गर एंड वेरी डाउन लेवल वर्ड आई एम चूजिंग, बट एक बंदा चाहिए जो बोले कि भाई यू आर डूइंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम. देन यू विल गेट काइंड ऑफ मोटिवेशन. You will also get demotivated, but it is your choice to get demotivated, to get depressed. It is your choice कि अगर, this is also very, you should be confident enough to get depressed also, and you have to get ready for the consequences of getting depressed. If you're not ready for the consequences, don't get depressed. Try to, um, if you have that fear of facing that consequences of being depressed, so try to
not get. You try to talk with other people. Don't get depressed at all कि वो thoughts आने मत दे. You work a lot. Work at all मतलब physically work a lot, where you don't have enough time for your mind to communicate with itself and go into this rabbit hole. वो करी मत. कुछ तो काम करते जाओ वैसा टाइप. If you are fearing for that consequences कि अगर मैं डिप्रेस हो गया तो क्या होगा. So if you have this kind of suicidal thoughts, uh, you have to be ready for that consequences कि in your absence what will you be serving your family, or what will you be serving your valued characters in your life, valued entities in your life कि what are you serving by choosing your suicide. So if your suicide is kind of serving your family in a good way, or in your जो तेरे मन में है और जो चाहिए, if you are only getting by your suicide, and you are okay for the consequences, and you are brave enough to commit suicide, I am okay with it. Okay, if your intentions are good, and if you have a perfect thought process, and you are confident enough to get suicide, attempt suicide. I'm not stopping you at all. But if I have that bonding with you, and I have that respect with you, I might kind of be a resistance for that. Ki, okay, you're not serving me by choosing that suicide. So try to give something before you're before attempting suicide, or try to serve me. I'll just ask him that, okay, what are you serving me by giving that suicide? If you're giving thought that, okay, tujhe, you will get more focused, or you will get more responsible by your friend getting suicide. If that is the point he's serving you after attempting it, it's kind of diplomatic. Okay, सोचने में पड़ जाएगी. Okay, if his suicide is giving me some meaning in my life, I think I'm okay with it. I give some respect to his decision also. Okay, you are taking that kind of decision, but it is kind of reflecting me in a good way. So should I stop him? पता नहीं भाई. It is also kind of same maturity नहीं है अभी भी. I'm just thinking out loud. ये शायद बहुत लोग को disrespect हो सकता है, or they might be not draw some parallels with me, but this is my content, and this is my personal content भाई. तुम कुछ भी बोलो. This is my bubble कि I am inviting all others to uh, give respond, or troll me or anything, but I'm inviting this. I'm confident enough to take this kind of. I'm confident enough for this consequences. So okay, let's end this meeting. एक आधा घंटा बचा. आधा घंटे में एडिट मारेंगे और मिलेंगे कल रात वापस 11 बजे. Cool.